So today we'll see expression for E equal to minus d phi by dt in electromagnetic induction. यहाँ हम एक्सप्रेशन देख रहे हैं E equal to minus d phi by dt. माइनस डी फाई बाई डी टी मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स. इसका थ्योरेटिकल प्रूफ हम यहाँ देख रहे हैं. दिस इज बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ फैराडे एंड लेंज़स लॉ. E इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी. E इक्वल टू डी फाई बाई डी टी फैराडे ने दिया था और उसको नेगेटिव साइन मतलब डायरेक्शन जो दिया वो लेंज़स लॉ दिया. तो उसका दोनों का हम यहाँ पे थ्योरेटिकल प्रूफ देख रहे हैं. ठीक है. इसमें सबसे पहले एक रेक्टेंगुलर फ्रेम रहेगा PQRS और रेक्टेंगुलर फ्रेम ऑफ कंडक्टिंग वायर PQRS. So first point, consider a rectangular frame. First point, consider a rectangular frame PQRS of conducting wire. From partly placed in the uniform magnetic field of induction B. जहां पे उसको रखा है वहां का इंडक्शन कैपिटल B है. I repeat, consider rectangular frame PQRS. This is the frame PQRS. It is partly placed in the uniform magnetic field. यहाँ इतना पार्ट इसका मैग्नेटिक फील्ड में है. So we can say it's a partly placed in the uniform magnetic field of induction B. So the point is, consider rectangular frame PQRS of conducting wire is partly placed in the uniform magnetic field of induction B. यहाँ मैग्नेटिक फील्ड जो है इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ फिगर. यहाँ नॉर्थ पोल और इस बोर्ड के उसका साउथ पोल रहेगा. सो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन रहेगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड. I repeat, very first point, consider rectangular frame PQRS of conducting wire partly placed in the uniform magnetic field of induction B. यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका इंडक्शन B. उसके बाद हम यहाँ देख रहे हैं let L be the length of side PS. Let L be the length of side PS or conductor PS and X be the length of the loop which is inside the magnetic field. Let next point, let L be the length of conductor PS and X be the length of loop inside the magnetic field. Therefore, area of the loop within a field, within a magnetic field, A equal to L into X, length into width. This is the area of the loop within a magnetic field. इतना एरिया है लूप का जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है. I repeat, very first point, consider a rectangular frame PQRS of conducting wire is partly placed in the uniform magnetic field of induction B. Then let L be the length of the conductor PS and X be the length of the loop inside the magnetic field. Let L be the X be the length of the loop inside the magnetic field. Then area of the loop inside the magnetic field, the area of the loop inside the magnetic field. This is the area. जो एरिया मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है और उसका फॉर्मूला हो जाएगा A equal to L into X is the area of the loop inside the magnetic field. अब इस केस से जो मैग्नेटिक फ्लक्स उस फ्रेम से जाएगा वो हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे.
magnetic flux through the frame is given by magnetic flux to the frame is given by phi equal to B into A. This is the formula for the magnetic flux to the frame in this position. Phi equal to B into A. So we write phi equal to B into L into X, because area equal to L into X. Area is L into X, so phi equal to Bx. This is the formula. This is the formula for magnetic flux passing through the frame. Now this frame is pulled outward. इस frame को हम बाहर खींचेंगे with constant velocity v. This frame is pulled outward with constant velocity v. Next point. Now the frame or loop, you can say, is pulled outward with constant velocity v. Therefore, there is rate of change of magnetic flux associated with the loop. इसलिए वहां पे जो मैग्नेटिक फ्लक्स लूप से एसोसिएटेड है वो चेंज होगा, एंड इट इज गिवन बाय तो इक्वेशन phi इक्वल टू बी एल एक्स था, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे डी फाई बाई डी टी इक्वल टू बी एल डी एक्स बाई डी टी, where dx by dt is velocity. Therefore, d phi by dt equal to blv. This is equation number 1. I repeat once again. हम यहाँ पे देख रहे हैं expression for E equal to minus d phi by dt. This is the expression for induced EMF produced in the coil. हमने सबसे पहले देखा यहाँ पे कि एक रेक्टेंगुलर फ्रेम है PQRS. इस फ्रेम को पार्टली हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है. उसका कंडक्टर जो है PS, उसका लेंथ L है, and the length of the loop which is inside the magnetic field is X. Therefore, area of this loop inside the magnetic field is L into X. So we write A equal to L into X. फिर इस केस में यहाँ से जाने वाला जो मैग्नेटिक फ्लक्स रहेगा, that magnetic flux is given by phi equal to BA, phi equal to BL into X. उसके बाद हम फ्रेम को आउटवर्ड खींचेंगे. जैसे हम फ्रेम को बाहर खींचेंगे, उस फ्रेम से एसोसिएटेड जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो चेंज होगा, and that change in magnetic flux is given by d phi by dt equal to BL dx by dt. इस इक्वेशन को हमने डिफरेंशिएट किया है यहाँ. So d phi by dt equal to BL dx by dt. This dx by dt is called the velocity. So d phi by dt is equal to BLV. This is the very first step of this derivation. ये first part of this derivation का कि d phi by dt equal to we get BLV. Now, as the frame, as we are pulling the frame out, जैसे हमने फ्रेम को बाहर खींचा है, उस केस में क्या होगा कि इस फ्रेम को जैसे हम बाहर खींचते हैं, यहाँ से यहाँ का जो मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड है इस फ्रेम के साथ वो चेंज होगा, और उसके वजह से यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स हो रहा है. रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया, इसीलिए यहाँ पे EMF इंड्यूस, यहाँ पे
जैसे हम फ्रेम को बाहर खींचेंगे इससे एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा तो इंड्यूस्ड करंट पास होगा एंड दिस इंड्यूस्ड करंट डायरेक्शन विल बी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. दिस इंड्यूस्ड करंट डायरेक्शन विल बी अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन. क्या होगा? ड्यू टू rate of change of magnetic flux, rate of change of magnetic flux, comma, EMF is induced. Therefore, induced current will flow through the frame. In clockwise direction. So we are getting here the current is flowing in clockwise direction. This is the direction of current here. Since current carrying conductor PS, अभी क्या होगा? ये current carrying conductor हो गया. Current carrying conductor PS magnetic field में रखा हुआ है, इसलिए उसके ऊपर force act करेगा. That force is given by F equal to BIL. This conductor PS is current carrying conductor. Now current carrying conductor PS is placed in the uniform magnetic field. Therefore, force will act on it. And it is given by F equal to BIL, where B is the magnetic field, I is the induced current, and L is the length of the conductor. Where B is the magnetic field, I is the current, and L is the length of the conductor. I repeat, जैसे हम फ्रेम को बाहर खींचेंगे, इस फ्रेम से एसोसिएटेड जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो चेंज होगा, इसलिए इस फ्रेम में EMF इंड्यूस होगा, EMF इंड्यूस होगा तो इंड्यूस्ड करंट पास होगा, and this induced current will flow in clockwise direction. अब इस कंडक्टर PS से करंट जा रहा है, इसलिए इस कंडक्टर PS के ऊपर एक फोर्स एक्ट करेगा, and that force is given by F equal to BI. Direction of this force is given by Fleming's left hand rule. Fleming's left hand rule के हिसाब से ये जो फोर्स है, this force is towards left, इस लेफ्ट डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करेगा. According to Fleming's left hand rule, according to Fleming's left hand rule, force is directed towards left. As we have seen here कि हमने फ्रेम को पुल किया है आउटवर्ड डायरेक्शन में. We are pulling the frame in outward direction. हम फ्रेम को आउटवर्ड डायरेक्शन में पुल कर रहे हैं. This is the frame. We are pulling the frame in outward direction. और इस फ्रेम में इस कंडक्टर PS पे जो फोर्स एक्ट कर रहा है, this force is towards left according to Fleming's left hand rule. ये डायरेक्शन है फोर्स की.
अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हम फ्रेम को आउटवर्ड पुल कर रहे हैं और फोर्स जो है वो लेफ्ट हैंड के तरफ एक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे when the frame is displaced through small distance dx, there is a small work done. When the frame is displaced through small displacement dx, comma, there is small work done, and it is given by dw is equal to f into dx. We assign negative sign here because this force and work done are opposite to each other. यहाँ force and displacement जो है वो एक दूसरे के अपोजिट में है। हम force लगा रहे हैं इधर, force इधर लगा है और displacement इधर हो रहा है। So force और displacement अपोजिट होने की वजह से इस वर्क को हम नेगेटिव वर्क बोलते हैं। This is the F force and displacement dx. Force and displacement are opposite to each other. Therefore, this work done is called as negative work done. dw is equal to minus. This is BIL into dx. This is the work done by reduction. Equation number 2. I repeat from the beginning. यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक रेक्टेंगुलर फ्रेम PQRS है। कंसीडर रेक्टेंगुलर फ्रेम PQRS of length L and x is the length of the loop which is inside the magnetic field. जैसे हम this frame is partly placed in uniform magnetic field, इस frame को का जो एरिया है inside the loop वो हो जाएगा A equal to L into x. This area is A equal to L into x. I repeat, consider rectangular frame PQRS of conducting wire partly placed in the uniform magnetic field of induction B. Let L be the length of the conductor PS and x be the length of the loop inside the magnetic field. Therefore, area of the loop within a magnetic field is A equal to L into x. इस केस में जो एरिया मैग्नेटिक फील्ड में है उसमें से जाने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स जो रहेगा that is phi equal to B into A. So phi equal to BLX. Magnetic flux through frame is given by phi equal to B into A, phi equal to B into L into x. Now we are pulling out the frame. Frame को हमने बाहर खींचा. Frame is pulled out with constant velocity v. तो वहाँ पे rate of change of magnetic flux होगा. That is given by d phi by dt equal to B L dx by this equation को हमने डिफरेंशिएट किया। phi equal to BLX को पिछले फ्रेम में मिला था। So d phi by dt equal to B L dx by dt is called the B. This is equation number 1. Now जैसे हम फ्रेम को बाहर खींचेंगे वहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद द फ्रेम है वो चेंज होगा। वहाँ पे EMF इंड्यूस होगा, इसलिए इंड्यूस करंट पास होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जैसे करंट पास होगा कंडक्टर PS जो है वो करंट कैरिंग कंडक्टर हो जाएगा, उस पे फोर्स एक्ट करेगा। दैट फोर्स इज गिवन बाय F equal to BIL. B मैग्नेटिक फील्ड है, I करंट है, L लेंथ है। देन अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल ये जो फोर्स है दिस फोर्स इज टुवर्ड्स लेफ्ट। ठीक है, we are pulling the frame towards right and the force is acting on the left direction. So there must be some work done when there is a displacement dx. So the work done is given by F into dx with negative sign. Negative sign indicates that force and displacement are opposite to each other. So dw is equal to minus BIL dx. This is equation number 2. Now in electrical system, what we see electrical system में भी जब इलेक्ट्रिकल पावर की बात करते हैं हम लोग तो इलेक्ट्रिकल पावर इक्वल टू इलेक्ट्रिकल वर्क डन अपॉन टाइम। इलेक्ट्रिकल
equal to electric work done upon time. Electrical power is given by P equal to dW by dt. It is the rate at which electrical work is done. So dW is equal to P into dt. Power is the product of induced EMF and induced current. So P की जगह आएगा EI. So dW is equal to EI dt. अब क्या होगा, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 हम इक्वेट करेंगे, दोनों में अपने को वर्क डन मिला होगा। ये वर्क डन है dW is equal to EI dt, और इसके पहले इक्वेशन 2 में अपने को वर्क डन मिला माइनस BIL dx। हम दोनों को इक्वेट करेंगे। सो इक्वेटिंग 1 and 2 and 3, EI dt equal to minus BIL dx. So II get cancelled there. EI dt is equal to minus BL dx. So E equal to minus BL dx by dt. Dt is shifted here. Dx by dt is called as velocity. So E equal to minus BLV. But BLV is equal to d phi by dt is equation number 1. So we put E equal to minus d phi by dt from equation 1. This is the theoretical proof of E equal to minus d phi by dt. I repeat the whole expression once again. All listen. Frame wise will go. Very first time consider rectangular frame PQRS of conducting wire partly placed in the uniform magnetic field of induction B. Let L be the length of the conductor PS and X be the length of the loop inside the magnetic field or within a magnetic field. Then यहाँ जो area होगा, area of the loop within a magnetic field A equal to L into X हो जाएगा। फ्रेम हमने रखी है, यहाँ पे फ्रेम पार्टली रखी है मैग्नेटिक फील्ड में। PQRS फ्रेम है कंडक्टिंग वायर की, L उसका लेंथ है कंडक्टर PS का, X उसका लेंथ है जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। इसलिए जो एरिया मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आएगा, इतना एरिया, दैट इज दिस एरिया इज इक्वल A equal to L into X। अब जैसे ही उस एरिया से जाने वाला जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, वो मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला हो जाएगा phi equal to P into A। यहाँ पे इस एरिया से जो मैग्नेटिक फ्लक्स जाएगा, this magnetic flux is given by phi equal to B into A, but A equal to L into X, so phi equal to BLX। फिर हम फ्रेम को बाहर खींचेंगे। This frame is pulled outward with constant velocity V। जैसे फ्रेम को बाहर खींचेंगे, वहाँ पे rate of change of magnetic flux होगा। And that rate of change of magnetic flux मतलब जो previous equation था phi का, उसको हम differentiate करेंगे d phi by dt equal to BL dx by dt। dx by dt is called as velocity, so d phi by dt equal to BLV we get here। Now, अब जैसे हमने फ्रेम को बाहर खींचा, वहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स हुआ, उसके वजह से इंड्यूस ईएमएफ हुआ, इंड्यूस ईएमएफ हुआ इसलिए इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा। दैट इंड्यूस करंट विल फ्लो इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जैसे यहाँ से करंट जाएगा कंडक्टर PS में से, उस कंडक्टर PS पे फोर्स एक्ट करेगा। That force is given by F equal to BIL. That force has formula F equal to BIL। अब ये फोर्स है, इस फोर्स का डायरेक्शन मिलेगा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से। डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स इज गिवन बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, and this force is towards left according to the Fleming's left hand rule। वो लेफ्ट की तरफ फोर्स एक्ट करेगा ना। अब फोर्स इधर एक्ट कर रहा है, हम फ्रेम को इधर खींच रहे हैं, वैसे फ्रेम का डिस्प्लेसमेंट dx होगा, वहां पे वर्क डन होगा, and that work done is given by dW is equal to F into dx। but force इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, they are opposite to each other, force and displacement, इसलिए हम वर्क डन को लेंगे नेगेटिव। नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर opposite to each other। now work done is given by dW is equal to minus F की वैल्यू BIL है, ये dx है, इक्वेशन नंबर 2। then electrical power is given by P equal to dW by dt, rate at which electrical work is done। so dW is equal to P into dt, so dW is equal to EI into dt। power मतलब EMF और I, इसका प्रोडक्ट होता है, वोल्टेज और करंट का प्रोडक्ट होता है into dt as it is। so dW is equal to EI dt। इक्वेशन 2 और 3 को हम इक्वेट करेंगे,
arithmetic equation 2 and 3. So ei dt equal to minus I bl dx. So I cancel. Ei dt equal to minus bl dx. So e equal to minus bl dx by dt इधर शिफ्ट कर दिया. This is velocity. So e equal to minus blv. ठीक है. So minus blv, this b term blv is dx by dt. ये टर्म अपने को dx by dt देगा. blv equal to dx by dt. So e equal to minus d phi by dt from equation 1. This is the theoretical proof of e equal to minus d phi by dt. It is very important question as far as the exam comes.